So hello everyone and welcome to the second part of P block elements group 15. Okay, so in our previous video we had a general discussion about the introductory part of group 15 elements. Today we will discuss about the physical properties of group 15 elements. Okay, so there are several properties which I have already written in the green board, just like atomicity, state, metallic character, boiling point, melting point and allotropy. Okay, I hope you know all these words before. Now let us talk about the atomicity. What atomicity is? So atomicity is a number of elements present in a molecule of an element. Okay, कि किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको उसकी परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहा जाता है. सो हियर एज वी हैव नाइट्रोजन as first element of group 15, so nitrogen has the atomicity of N2. It is basically found in the form of N2. Okay, so nitrogen is a diatomic molecule. Okay, now if we talk about phosphorus, the next element of group 15, all the other elements of group 15s are polyatomic. So we can take several examples, like phosphorus is found in the form of P4. Okay, so phosphorus is tetraatomic. Sulfur basically found in S4 and acid form. The most stable form of sulfur is acid. So here we can say in group 15 nitrogen basically is found in the diatomic form and all others are found in the polyatomic form. Okay, so I hope the first property is almost clear to you. The next one is the state. State means what? Whether the elements are found in solid or liquid or gaseous state. So we all know that nitrogen is a gas. So nitrogen is found in gaseous state. Apart from nitrogen, all other are found in solid state. All other and solid. Okay, so here we can say that nitrogen is the only element in this group which is found in gaseous state and all others are found in solid state. It means the phosphorus, sulfur, arsenic, antimony, bismuth all are found in the solid state. Now let us talk about the metallic character. So moving down the group, okay, moving down the group in a periodic table, the metallic character increases. So here in group 15 it follows the same trend that the metallic character increases down the group. मतलब कि जब आप ग्रुप में 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो धात्विक प्रवृत्ति है या मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? बढ़ेगा. इसका मतलब है जब आप नाइट्रोजन से नीचे फॉस्फोरस की ओर जाएंगे, फिर सल्फर की ओर जाएंगे, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. और ये आप इस चीज़ से भी बता सकते हैं, चूंकि नाइट्रोजन गैस से नीचे जाते हैं तो सॉलिड जो नेचर है वो बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि मेटालिक नेचर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा. ओके, the next point is boiling point. So boiling point also increases down the group as the metallic character and the nature of the covalent bond is getting increased. Okay, so the boiling point also increases simultaneously down the group. Okay, इसका मतलब क्या है कि जब आप ग्रुप में नाइट्रोजन से नीचे बिस्मथ तक जाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट. सो हियर द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कीप्स अ बिट ऑफ डिफरेंस in themselves. Like melting point tends to increase up to
आर्सेनिक। ओके, क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, हमने देखा किया कि मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक तक तो क्या हो रहा है, मेल्ट होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। बट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो मेल्टिंग पॉइंट है फिर से क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे एक जेन्युइन सा रीज़न है कि नीचे जाने पर जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न, द सिल्डिंग इफेक्ट इज द रीज़न। एंड a weak electrovalent bond, or I should say a weak bond between the electrons is the reason, or between the atoms is the reason of decreasing the melting point from arsenic to bismuth. Okay, so moving towards our last point is allotropy, and you all know what allotropy is. If something is found or any element is found in more than one form, just like carbon is basically found in three forms, three general forms. One is charcoal, the next one is diamond, and the third one is graphite. Okay, so apart from nitrogen, all the other elements of this group, all of them shows allotropy. Okay, so apart from nitrogen, all other elements shows allotropy. Okay, just like as we know, phosphorus is found in the form of red phosphorus and yellow phosphorus. Similarly, sulfur is found in red form, yellow form. Okay, so in this way we can say that apart from nitrogen, other elements of this group shows allotropy. So take the screenshot of this, and I hope it is very clear to you all whatever we have learned today. The next time we will talk about the chemical properties of the elements of this group. Thank you.